standards and ethics in advertising. See, since we all know that advertisements are a very persuasive thing that happens, all right. आप लोगों को persuade करने की कोशिश करते हो कि so that जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद लें, आप लोगों को मनाने की कोशिश करते हो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो जिससे कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको खरीद लें। और एडवर्टाइजमेंट के साथ एक बहुत ही बेसिक रूल रहा है कि उसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए ताकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। जब तक आप लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं करोगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू वॉच योर एडवर्टाइजमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू सी योर एडवर्टाइजमेंट। सो फॉर दैट मैटर, जहां पे क्रिएटिविटी आ जाती है हमारे पास, हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि क्रिएटिविटी, क्योंकि हमें पता है क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। आप क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ भी दिखा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट सो दैट वी डू नॉट क्रॉस अ लाइन in terms of creativity or in terms of showing that the product that we are advertising is the best, we need to maintain certain ethics. And for that matter, we are going to study about what exactly is ethics, what are the ethics in advertising, and what are the unethical practices that are already there in the advertising and how it is happening. So what are you going to learn in today's class? Basically, you will understand what exactly is ethics, and then we'll basically study about the definition of ethics. Basically there are a set of rules, set of guidelines that have been set by the Council of Advertising. Okay, in India, as of now, there are two advertising regulatory bodies, which is first one is ASCI and the second one is AAAI. So ASCI stands for Advertising Standards Council of India. It is a self-regulatory organization. When I say self-regulatory, what do I mean by self-regulatory? It means that वो खुद को ही basically खुद पे ही वो खुद ही basically उसमें कोई, it's not a government owned body, neither it's a private organization, it's a self-regulatory body, meaning that advertising agency से ही कुछ लोगों ने मिलके एक council form किया है, और वो लोग अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है या कोई भी कंप्लेन आती है, उसको फिर वो लोग रिजॉल्व करते हैं। Okay, they keep a check on the advertisements that are published online or that are published on television or radio or newspaper. They keep a check on that, and if there is any discrepancy, if they find there's any discrepancy in that, they try to resolve it. They tell the advertiser that okay, this is something which is wrong in the advertisement. Either you modify it or you just take it off from the media. All right. So first we are going to understand what is ethics. Then we are going to discuss about the ethical standards that are especially, relevant to advertising. Okay. We are going to also learn about what are the ethical guidelines that are there for advertising. You must also, advertising should ensure that you are able to differentiate between what is, what are the facts and what is an opinion. So you must understand. So advertising basically should give you a clear picture of what exactly is a fact and what exactly is an opinion. Opinion is something that has been a statement or a point of view that the other person has. All right. So again, we are going to post that we are going to study about what are the major ethical issues that are there in India. Okay. And in the end, we are going to discuss and we are going to touch about surrogacy and subliminal advertising. So surrogacy advertisement, you already have seen the advertisement, but most of you do not understand that, okay, this is actually a problem. This particular advertisement is not supposed to go on air. So surrogacy and subliminal advertisements are something which we are going to discuss in today's class. All right. So moving on, what is ethics? So just to tell you a quick brief or the quick history of the word ethics, the word ethics, it was derived from where? Ethos. It's a Greek word which mean ethos. Net में कई बार आपके पास ऐसे questions आ जाते हैं that what was the origin of the word ethics, or from where has the advertising word evolved. All right, आपसे पूछा जाता है net में कि advertisement जो adverte से आया है,
उसका क्या मतलब होता है या कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नेट में, आप एक बारी अगर आप ध्यान में रखें तो एंशियंट ग्रीक वर्ड एथोस, जिसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर या किसी का मॉरल नेचर। ओके, सो एथिक्स को अगर मैं डिफाइन करने पे आऊं, एथिक्स को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, एक सेट ऑफ रूल्स है, जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है जिसमें हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ कंडक्ट हमारा लिखा गया है। सिमिलरली एथिक्स जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी है, जो आपको किसकी तरफ पॉइंट करता है, टुवर्ड्स व्हाट इज राइट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट exactly is the meaning of ethics. All right, then it is all about honesty and being fairness. You know, in advertisement all you need to do is you need to be honest and you need to be fair. You see a lot of advertisements which are misleading. वो आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी दिखती है जो आपको कई बार मिसलीड करती है कि आप 15 दिन के लिए आप ये प्रोडक्ट को यूज कीजिए एंड देन यू विल सी unrealistic effects of that. So that is something which is very misleading. And you know, वहां पे आपका जो honesty का factor है वो जो है वो नहीं वर्क करता. Okay, so honesty and fairness is something that needs to be there in the advertisement. Respect for privacy. Okay, so each and every individual has the rights to privacy. All right, it's a human right. We all have rights to privacy. So one must ensure that by advertising a particular product, you cannot, you know, you should not invade the privacy of the individual or of a particular organization or for a group of people. Okay, as I said earlier also, what are ethics? Ethics is the duty to distinguish between the facts and the opinions. Okay, opinion is something which अगर किसी particular person का कोई point of view है, that will come under opinion. And what is a fact? Fact basically stands for what exactly the information that there needs to be in the advertisements. All right, then next, it should not discriminate amongst the weaker sections. It should not, the advertisement basically should not discriminate what is right and what is wrong. आप अगर कई बार दिखाते हो, अगर फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि 15 दिन में गोरापन पाइए, तो दैट मीन्स दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अमंगस्ट हु आर those who are not fair and those who are fair. So there is a discrimination that is being shown in the advertisement, which is not right. All right, so they should not be able to discriminate. And then in the last, what, how do I define ethics? Not to use dishonest means to obtain information. ओके, रिपोर्टिंग में भी, जर्नलिज्म में भी हम लोग कई बार ऐसे मीन्स का यूज करते हैं, ऐसे डिसऑनेस्ट मीन्स को हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. सो देयरफॉर व्हाट how do I define ethics? Basically, I say that there should not be any dishonest means used to obtain the particular information. Okay. Now, this was the basic guideline of what exactly is the meaning of ethics. All right, ethics as a whole. All right, now we'll come to what exactly are the ethics in advertising. Okay, so as I said in the starting of the class as well, that every advertising will try to persuade the people. They'll try to, they'll convince you, they'll almost get onto your nerves so that you are ready enough to buy that particular product. So in this process there are chances, आपकी persuasion power जो है या आपकी जो convincing power जो है, आप लोगों को convince करने के चक्कर में इतना आगे तक बढ़ जाते हो कि आप ये भूल जाते हो that and there are chances कि आप उनसे सच छुपाओ. आप इतने अच्छे facts, आप इतने अच्छे benefits उस product के लोगों को बता दोगे कि आप उसके negative effects क्या हैं या उसके side effects क्या हैं उस particular product के, वो चीजें आप छुपा देते हो. So there are chances कि आप you are supposedly, intentionally or unintentionally, you might hide the truth and you might not tell the facts, in order to increase your sales and the profit of by selling the particular product. But as a responsible advertiser and as a responsible citizen, you are, your moral duty, you are obligated towards the consumers. All right, so you must ensure कि आप अपने consumers को, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, consumers are those who are basically the
यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, आप उनको फेयर इंफॉर्मेशन दो, आप उनसे सच बोलो, जितना भी फैक्ट है आपके प्रोडक्ट का वो सब आप उनको बताओ। जो भी बेनिफिट्स हैं वो तो बताओ ही बताओ, बट ओवर एग्जैजरेट करके चीजों को ना बताओ। ओके, सो एन एडवर्टाइजर शुड मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड दे मस्ट इन्फॉर्म द फैक्ट्स दैट आर related to the product to their consumers. All right, so अगर आप इनएथिकल प्रैक्टिसेस ऐसे ही अगर कंटिन्यू रही मार्केट में, so it is somehow going to destroy the image of the entire advertising itself, and people will basically stop watching the advertisements, and we'll come to a saturation point where nobody would be interested in watching advertisement. As of now also, whenever you see an advertisement, the moment it comes skip ad, you are the one who's going to run and press that button of skipping the advertisement. So as of now also हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स देखने के लिए, मगर अगर ऐसी ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती रही तो देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू वॉच द एडवर्टाइजमेंट्स. ऑलराइट, so that is why ethics in advertisements need to be followed. Okay, so now continuing forward, what are the advertisements, what are the ethical standards that are especially relevant to advertising? Okay, the very first factor that says respect the truthfulness. Okay, always be truthful towards whatever kind of advertisement that you are going to show. Never directly intend to receive. Okay, never use simply on true advertising. आप कभी भी simply यूज नहीं करेंगे, simply जैसा word जो है वो particularly आप कभी यूज नहीं करेंगे true advertising के टाइम पे. ओके, आप कभी भी ट्रूथ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बाय इम्प्लाइंग थिंग्स दैट आर नॉट सो विदहोल्डिंग द रेलेवेंट फैक्ट्स. अगर आपको आपके प्रोडक्ट के किसी एक पर्टिकुलर बेनिफिट के बारे में भी कोई भी डाउट है, तो आप उस पर्टिकुलर बेनिफिट को अपनी एडवर्टाइजमेंट में रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि देयर आर चांसेस दैट पीपल माइट get misleaded. Okay, puffery is acceptable where it is coherent with recognized and accepted rhetorical and symbolic practices. Now, what do I mean by puffery? This is a very interesting term that has emerged up in this process. So puffery, see, is something wherein you are sort of exaggerating the product. Okay, how many of you have seen the Red Bull's advertisement wherein it says that Red Bull gives you wings? So that was a, so basically by puffery I mean when you are using certain metaphors or certain similes or certain alliterations which are to some extent going to exaggerate the product, or which are going to somewhat exaggerate the experience that one has by the use of that product. So that is allowed. Puffery is to some extent allowed, but it also has its limitations. It needs to ensure that it has symbolic practices only. All right, so respect the dignity of each person. Do not you must understand there are certain advertisements that are quite culturally, see, that we live in a country which is very culturally diverse. All right, so we must respect the dignity of each and every person and each and every religion along with that. So you must not advertise which so the advertisement should not be in such a manner that it might hurt the dignity of another person who belongs to a particular religion. Okay, and we must not explode one's lower intention. We must give certain special care to the weak and to the vulnerable children, young people that are there, and the elderly poor. So basically, those section of the society who's vulnerable, who was at the peak of vulnerability, and we must ensure that we are giving them special care. And we also ensure that आप अपनी social responsibility को पूरा करें, उसको भी respect करें, and the responsibility that you have towards society as an advertiser should be followed. Okay, now when I talk about the ethical guidelines for advertising, I see that ethics in advertising means that the advertiser should not only do good advertising, meaning that thereby honest advertising,
It means that only true facts, no exaggeration, no lies about the product, service, idea, or institution should be stated. So basically, what we are trying to say here is that जब मैं advertise when I talk about the ethical guidelines that are there in the advertisement, I mean that मेरे को कोई भी exaggeration, what do I mean by exaggeration? Exaggeration basically is what wherein you are telling something about the product which is actually at a very high level. Product यहाँ पे आप उसको एक next level पे लेके जा रहे हो, आप उसको इतना बड़ा चढ़ा के अपने कंज्यूमर्स को दिखा रहे हो और उसके बारे में इतना ज्यादा आप हाईलाइट कर रहे हो जिससे जो एक्चुअली वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स में आता भी नहीं है. ओके, सो देयर शुड बी नो एग्जैजरेशन, देयर शुड बी नो लाइज अबाउट द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट है या अगर कोई सर्विस है या कोई आइडिया भी है. सी सिंस वी ऑल नो दैट एडवर्टाइजिंग इज व्हाट इट इज अबाउट, सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया. कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, कोई भी सर्विस आप बेच सकते हो, या अगर कोई आइडिया भी है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी आपको कोई एग्जैजरेशन नहीं करनी है, कोई किसी तरह का झूठ नहीं बोलना है. सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है एडवर्टाइजमेंट में, जो फैक्ट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के, या जो एक्चुअल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ उसके बारे में बात करनी है. ओके, ethics in advertising also means that only good products, services and ideas should be advertised, and that too to the right consumers. Okay, advertising में एक और point आता है आपकी target audience का. When I mean target audience and when I mean right consumer, see there are certain products who are not meant there are certain products which are only meant for a certain section of the society. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मुझे मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जिसकी डिमांड सिर्फ यंगर जनरेशन में है. ओके, या जो ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए, कोई ऐसी मेडिसिन होगी या कोई ऐसी चीज होगी जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो अगर बच्चे उस चीज को भी अगर उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो दे माइट ऑल्सो इट माइट हैव bad impact on the student, on the children. Like for example, products like cigarettes, alcohols, इन सबको हमें avoid करना चाहिए. So advertisements जो है वो सिर्फ अच्छे products की, जिनका आपके लिए कोई नेगेटिव, आपकी सेहत पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या आपकी ऐसी कोई सर्विसेज जिनसे आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या ऐसा कोई आइडिया जो आपके लिए हानिकारक नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीजों की एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए. इंडिया में अभी भी एडवर्टाइजमेंट फॉर सिगरेट्स, अल्कोहल्स और ये सब चीजें जो है बैंड है. अल्कोहल और सिगरेट्स या कोई भी हानिकारक चीज जो है जो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर सकती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैन है, आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते. मगर देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने इसके लिए भी एक सब्स्टिट्यूट निकाला है. विल कम टू दैट इन द लेटर, इन द लास्ट सेक्शन व्हिच इज अबाउट surrogacy advertisement and subliminal advertisement. Then only I'll tell you how advertisement for these products is very cleverly done. Okay, so ads that are showing testimonials should be restricted to competent persons who must express honest views and choices. ओके, ऐसी कोई एड जिसमें टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, बेसिकली फॉर इंस्टेंस मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया और मुझे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, अब मैंने अपना फीडबैक दिया बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. Okay, so now since I have used the product, so I am going to testify that okay, this product that I have used is a very good product, and I am basically recommending the product to the other people that are there in the market. So although I am a very normal person, मेरी टेस्टिमनी से लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, जब अगर मेरी जगह कोई सेलिब्रिटी उसको टेस्टिफाई करेगा या अगर कोई सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करेगा, सो वो चीज बेसिकली लोगों पर ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी लोगों को. ओके, सो एड्स शोइंग टेस्टिमोनियल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू कॉम्पिटेंट पर्संस जो अपने ऑनेस्ट व्यूज एक्सप्रेस करेंगे. मतलब मैं हो सकता है कि मेरे को किसी एडवर्टाइजर ने पैसे दिए और मुझे ये बोला हो कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है. ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन. ओके, दैट इज व्हाट बेसिकली हैपेंस. ऑलराइट, सो जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं जहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आते हैं, वो उसमें रिव्यूज जो है वो ऑनेस्ट होने चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी द पेड वंस. ऑलराइट,
Ads in poor taste and offensive to public decency with double meaning tone must be avoided. ऐसी कोई भी ad आपको नहीं दिखानी है जहाँ पे आपको डबल मीनिंग टोन जो है वो अवॉइड कर, बेसिकली या ऐसी कोई भी एड आपको नहीं दिखानी है जहाँ पे आपको डबल मीनिंग या कोई भी किसी भी तरह की डिसेंसी जो है वो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में ना दिखाएं। ऐसी कोई भी एड आप ना दिखाएं जो कि ऑफेंसिव हो लोगों के लिए, लोगों के देखने से। एंड ऐसी Okay. Ads should avoid attacking unfairly competitors. In some advertisements, there are in some advertising should be honest and objective, informative and persuasive in contents. So ads जो कि ऐसी हैं जो unfairly competitors in some of advertising should be, ऐसी advertisements आपको उठानी है जो कि आपको advertisement के बारे में ऐसे बात करनी है जो जिससे कि आप ऑनेस्ट लगे, ऑब्जेक्टिव लगे, इंफॉर्मेटिव लगे एंड परसुएसिव लगे इन कंटेंट्स में। ओके, आई कैन सी चैट में किसी ने पफरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया है, दैट मींस दैट दे हैव नॉट अंडरस्टूड। सो सी, पफरी इज अ सिंपल टर्म व्हिच मींस एग्जैजरेटेड और फॉल्स प्रेज। आपने किसी भी चीज के बारे में अगर झूठी तारीफ करी है या अगर आपने उसको एग्जैजरेट करके दिखाया है, या अगर आप उसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखा रहे हो, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज पफरी इज। ऑलराइट, आपने चीजों को हाईलाइट कर दिया है, आपने चीजों को पफ अप, बेसिकली अगर मैं जो टर्म है पफ अप मतलब अगर आपने उसके बारे में जैसे जो जितनी भी उसके अंदर इतनी खामियां इतने बेनिफिट्स नहीं भी थे बट फिर भी आपने उनको बना दिया। सो आपने झूठी तारीफ करी है, आपने फॉल्स प्रेस किया है उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज व्हाट पफरी इज ऑल अबाउट। ओके, so now coming to major ethical issues that are there in India, as I said अभी हमने previously बात करी थी। Okay, am I clear on puffery? Can I get a thumbs up? Okay, great. Okay, so there are certain major ethical issues in advertising that are there in India. As I said previous slide में हमने जहाँ बात करी थी, advertisements only for good products should be there. So similarly in India हमारे पास सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। हमारे मीडिया में बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाती हैं, जस्ट लाइक इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, ये सारे प्रोडक्ट्स का सी सरोगेसी का मतलब बेसिकली जो है वो ये होता है कि आपने एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्रिएट किया है अपने ब्रांड नेम से, और आपको पता है कि आप अपने ब्रांड नेम में जो बैंड प्रोडक्ट है आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, बट आपने क्या किया, आपने वही सेम नेम उसी सेम ब्रांड के अंदर एक नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट कैटेगरी को आप जो है इंडोर्स कर रहे हो, उस प्रोडक्ट कैटेगरी को आप एडवर्टाइज कर रहे हो। लाइक हमें सबको पता है इंपीरियल ब्लू जो है वो मार्केट में क्या किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, बट जब हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंपीरियल ब्लू जो अल्कोहलिक बेवरेज है उसकी नहीं दिखती, बट हमें जो वो एडवर्टाइजमेंट है वो म्यूजिक सीडीज की दिखती है। इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज, इंपीरियल ब्लू मिनरल वाटर और इंपीरियल ब्लू एरिएटेड वाटर और सोडा। सो बेसिकली हमें वो सारे प्रोडक्ट्स जो जिनका प्रमोशन बैंड नहीं है वो उन प्रोडक्ट्स के लिए अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। सो सरोगेसी, तो देयर इज अनदर वर्ड फॉर सरोगेट इज सब्स्टिट्यूट, जहां पे हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। ओके, तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स दे रेफर टू अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि आप विच डुप्लीकेट्स द ब्रांड इमेज, okay, of one of the product to promote another product of the same brand. See, as I said, हमें पता है imperial blue जो alcoholic beverage है उसको हम advertise नहीं कर सकते क्योंकि that comes under a banned category of products. So what we are going to advertise, we are going to advertise the imperial blue music CDs or any other product or any other lineage of products that they have created under the brand of imperial blue. Okay, so the word surrogate means a substitute. Usually brands जो है वो surrogate advertisements तभी यूज करते हैं जब उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बैंड होते हैं।
So they are a banned product under the wheel of a substitute good. A popular instance of this can be a liquor product advertised as either a soda drink or an entirely unrelated product like music CDs within the same brand name. So am I clear on surrogate advertisement, guys? Now, what are the benefits of using the surrogate advertisements? ओके सो बेनिफिट्स क्या है हम लोगों को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमें पता है यार बैंड प्रोडक्ट है बट फिर भी हमें सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स क्यों दिखानी पड़ती है? मेजर रीजन, या गवर्नमेंट, हमें भी ये भी पता है कि लिकर का कंजम्पशन करने से हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा हजार्ड कैन बी हजार्डस टू आवर हेल्थ, but why are we still advertising it, or why are we still doing it? Major reason for that is it helps the companies to generate revenues फ्रॉम बैंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं इसके पीछे बहुत ज्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है. अगर मुझे कोई सरोगेट एडवर्टाइजमेंट देनी है तो एज अ मीडिया ओनर I will charge the double of what basically that I would charge from a normal product. So it helps the companies to generate revenue from the banned products and it keeps them. So this is a feature, this is a benefit for the media, and it keeps on reminding consumers about the banned products indirectly. Okay, so आपको indirectly वो अपने प्रोडक्ट की याद दिलाता रहेगा. इंपीरियल ब्लू जो है वो अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज करके indirectly अपने प्रोडक्ट की आपको याद दिलाता रहेगा. Cause in advertisement we say a very famous term, out of sight is out of mind. So if you are, so out of sight is out of mind. If you do not see a particular product for a very long time, then it is surely going to erase from your memory. So that is why that is why organizations continuously try to keep on advertising themselves. So it keeps on reminding the consumers about the banned products indirectly, and if nobody can advertise, then the threat of competition from new players is minimized. So अगर आपका कोई भी अगर कोई भी एडवर्टाइज नहीं कर पाएगा तो कंपटीशन जो है उसका जो थ्रेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, अब सरोगेट की लिमिटेशंस क्या है? इट कैन बीट द पर्पस ऑफ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाय गवर्नमेंट. द नॉलेज एंड अवेयरनेस लेवल ऑन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट इज वेरी लो. सी, हम लोग, since we are studying about advertisement, since we are mass communication students, we understand the concept of surrogate advertisements. We know that they are not that what exactly the product is trying to do here. But but as a student of mass communication, we only know about what exactly the product is, what exactly the advertiser here is trying to do. But those who have not studied mass communications, those who have not studied advertisement, they probably cannot differentiate between the product. They would probably हो सकता है उनको ये भी पता ना हो कि यार ये म्यूजिक सीडी के लिए एडवर्टाइज कर रहा है या वो एक्चुअली उस अल्कोहलिक बेवरेज के लिए ही एडवर्टाइज कर रहा है. So since the awareness about surrogate advertisement is very low, so it can also impose a negative impact on society by promoting the health injurious products. Okay, so it definitely plays a negative impact on society क्योंकि ऐसे products को advertise कर रहे हैं जो कि which are very injurious to health of the common people. Okay. So the major ethical issues in advertising in India, first one was the surrogate advertisement. Second is subliminal messages. Now, what do I mean by a subliminal message is that, see, subliminal messages जो है, they are somewhere कोई भी वीडियो क्लिपिंग चल रही है और आपने इंस्टेंटली वहां पे कोई एक 4 सेकंड का या 5 सेकंड का आपने कोई एक उसके बीच में इमेज देखा या कोई ऐसा व्यू देखा जो आपके दिमाग में रह गया, जिसने बेसिकली आपको मिसलीड किया. सी, इंसर्टिंग सब्लिमिनल मैसेजेस इन एन एडवर्टाइजमेंट इज एन इनहेरेंटली मिसलीडिंग एक्शन. बेसिकली क्या करते हैं सब्लिमिनल मैसेजेस? आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की थिंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं विदाउट इवन देम रियलाइजिंग कि एक्चुअली में मैनिपुलेशन जो है वो हो रहा है. आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड, बट थ्रू सब्लिमिनल मैसेजेस, क्योंकि सब्लिमिनल मैसेजेस जो है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एंगेज करते हैं. सो दैट इज व्हाई some minimal messages in advertising there that
engage people subconsciously. These advertisements use various colors, shapes, and words to make a small but powerful association between a brand and its intended meaning. How many of you here have seen Friends, guys? Okay. So do you remember the scene where Chandler basically tries there was a scene जहाँ पे वो एक hypnosis tapes को सुनता था रात को, और जिसमें बस उसको एक लाइन सुनने को मिलती थी that you are a strong confident woman. Okay, so basically Rachel started reading it, but then Chandler, since he also started, listening to those hypnosis tapes that you are a strong, confident woman, and basically by listening to those thing to that particular statement, he stopped he stopped smoking. So what happened here was that particular message unknowingly tried to manipulate him, and unknowingly, he tried to uh, उसके सबकॉन्शियस माइंड को उस मैसेज ने, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने इफेक्ट किया, एंड एंड बेसिकली क्या हुआ उससे, उसने उसका जो इफेक्ट था, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग. Another example, so that you can understand subliminal messages perfectly, is that कई बार आप movies देखते हो, okay, there are a lot of movies and there are a lot of serials that you watch also. उन serials में, ऑल्दो हमें पता है मूवीज में आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, यू हैव टू एंश्योर जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं वो आप स्टार्टिंग में या एंड में, वट एवर यू फील लाइक, आप उसमें अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बता देते हो. बट इन बिटवीन मूवी इट इज नॉट गाइडेड कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट्स करो. बट कई बार अननोइंगली भी मूवीज में आप जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम डायरेक्टली आपको दिख जाते हैं. आप ऑल्दो वो दिखाना नहीं चाहते, वो या तो वो उनको ब्लर कर देंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा दैट ओके यही पर्टिकुलर ब्रांड है. लाइक मैकडी का एम कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको. या एक मूवी आई थी तारा रंपम, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी. तारा रंपम में तारा रंपम वाज अ मूवी जिसमें द यूज ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्लिमिनल मैसेजेस हैड हैपेंड, जहाँ पे वो कार रेसिंग के लिए जाते हैं, एंड वहां पे हर तरह की गाड़ियों का, हर तरह के ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स का उनकी कार के ऊपर स्टिकर्स चिपके हुए थे, जिससे कि they were able to advertise themselves, which is not also good. Another example of subliminal messages is that KFC. So KFC also drew negative attention जब 2008 में उन्होंने एक कमर्शियल एयर किया था, जिसमें if you can see in this image, the lettuce here in the burger that is shown is featuring a green dollar bill. Okay, so this particular this particular message, although छुपा हुआ है, directly emphasize नहीं कर रहा है, but certainly it somewhere or the other draws your attention towards it. Okay, so KFC ने ऐसे negative attention जो है 2008 में अपने इस कमर्शियल से उनको मिला था. Are we guys clear on each and every topic that we discussed? So from which language the word ethics has been derived from? Latin, Greek, English, or Sanskrit? Okay, so as we all know that ethics से जो ये word है, Greek language से जो ये word है ethics, it has been derived from the Greek language. This question is self-explanatory in itself, and I guess I do not need to ensure. So the word ethic is derived from the ancient Greek word which means character, जिसका मतलब क्या है, हमने पुरानी क्लास हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर या फिर moral of the nature. As I said, similarly the another word advertisement की अगर मैं लाइन में बात करूं तो yes, it means the moral of the nature. Okay, moving forward to the next question. Ethics in PR is also known as philosophy of what? What do you mean by ethics in PR is also known as philosophy of what? Is it society, justice, morality, or none of the above?
Okay, so most of the people are saying morality. Let's check. Exactly, it is the correct answer, morality. See, ethics in public relations में जो है उनको हम philosophy of morality भी कहा जाता है, क्योंकि it is considered as one of the moral contacts of in किसी भी working journalist का, किसी भी working professional के लिए जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए एथिक्स का दूसरा मतलब है कि दे हैव टू फॉलो द मॉरल वैल्यूज दैट आर बीइंग एंगेज्ड, क्योंकि एथिक्स का मतलब ही हमने क्योंकि पढ़ा था अभी कि एग्जैक्ट मीनिंग ही उसका मोरालिटी होता है, कैरेक्टर ऑफ इट्स मॉरल्स. सो दैट इज व्हाई ethics in public relations, yeah, advertising is also known as the philosophy of the morality. Okay, moving forward to the next question. What does surrogacy in advertising means? Ethical, false, submerged, or substitute? Can I have some answers, guys? Great. So as we also discussed while we were studying the surrogacy in advertisement, surrogacy का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट. आपने एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, आपने एक बैंड प्रोडक्ट को जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, उससे आपने उस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया. आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक ऐसे प्रोडक्ट से जिसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो पॉसिबल है. Okay, moving forward to the next question. Subliminal messages tend to dash the audience. Direct, they tend to direct the audience, or they tend to manipulate the audience, they tend to baffle the audience, or all of the above. Okay. Exactly, the correct answer is manipulate. As I said, subliminal message जो है वो एक attempt है towards the manipulation of a person's thinking. जो subliminal messages जो हैं वो आपको manipulate करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब manipulate हो गए उनसे, उन basically उस message से जो play हुआ है, और आपको subconsciously वो affect कर जाता है. Okay, now moving on to the next question. Which of the following is not a principal ethics of advertising? No exaggeration, respect for privacy, puffery, or all of the above? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग का? नो एग्जैजरेशन, रिस्पेक्ट फॉर privacy, puffery, or all of the above? I know this is a quite tricky question. Okay, some are saying no exaggeration. Guys, it is all of the above. See, the question was, which of the following is not a principal ethics of advertising? ये तीनों आपको exaggeration नहीं करना है. You have to understand the respect for privacy and आपको पफरी भी नहीं जाना है. You have to try to कि आपको पफरी की जरूरत ना पड़े. ओके, आपको एग्जैजरेशन नहीं करना है. पफरी का अनदर वर्ड क्या है? फॉल्स प्रेजेस ना, फॉल्स एग्जैजरेशन. ओके, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप पफरी भी ना करें, आप प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करें, एंड देयर इज नो एग्जैजरेशन ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस दैट आर देयर, दैट इंक्लूड्स नो एग्जैजरेशन, रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड पफरी एंड ऑनेस्टी जो है, ये सब चीजें जो है इनमें से कोई भी प्रिंसिपल एथिक्स नहीं है एडवर्टाइजमेंट का. You want to see, पफरी का अनदर मतलब है फॉल्स प्रेजेस, झूठी तारीफें करना. ठीक है, आपने किसी एक प्रोडक्ट के बारे में फॉल्स प्रेजेस कर ली, झूठी तारीफ कर दी आपने, विच इज ऑल्सो नॉट राइट. ओके, आप नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स के बारे में झूठी तारीफ. आप नहीं उनके बारे में गलत किसी भी तरह की गलत बातें जो है वो आप नहीं कह सकते. क्या आप उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के भी आप बेसिकली बात नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट पफरी इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट. सो देयर इज नो एग्जैजरेशन. आपको प्रोडक्ट को एग्जैजरेट करके नहीं दिखाना है, आपको प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना है, और आपको पफरी को भी फॉलो नहीं करना है. सो इनमें से कोई भी जो है वो एक प्रिंसिपल एथिक्स नहीं है एडवर्टाइजमेंट का. ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है,
by adding the word not a principal ethics of advertising. आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है कि आपको लगे कि कौन सा प्रिंसिपल एथिक्स है एडवर्टाइजिंग का, बट the you have to lay your emphasis on the word not here. Which of the following is not a principal ethics of advertising? So none of them is, so all of the above are not a principal ethics of advertising. Am I clear now or on this question? Great. So that is all for today's session, guys. I hope you understand everything.